Hello everyone, welcome back to question and answer series of nucleotides biology discussed, that is your bio queries. And this is your first one, that is for the cell biology. Okay, so let's start our bio queries section. Okay, the first question, what is considered the basic unit of life according to the cell theory? Okay, हमर सेल थ्योरी हिसाब से कहा के बेसिक यूनिट हिसाब से कंसीडर करा जायसी ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म. बेसिक यूनिट हिसाब से कहा के कंसीडर करा जायसी दैट इज द सेल. सेल के कहा जायसी बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली के कहा जायसी. सो द करेक्ट आंसर दैट इज योर सेल. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Who is credited with the formulation of the cell theory? Cell theory किए propose करी थी, लेकिन माने the credit goes for the cell theory कहा के जैसे the credit goes to two scientists. One is the Sladen and another one that is the Swan. Sladen and Swan they propose the cell theory. तो हमर ना ऑप्शन देखमा ऑप्शन ए रे अछि चार्ल्स डार्विन, बी मैथियस स्लेडन, देन सी अछि जॉर्ज मेंडल, ग्रेगर मेंडल एंड द डी रे अछि एंटन वॉन लीeuwenhoek. ओके तो हमर सेल थ्योरी प्रपोज करथिले केन दुटा साइंटिस्ट स्लाइडन एंड स्वान. तो हमर इन स्लाइडन रो ना छै, सो दैट द करेक्ट आंसर दैट इज योर बी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. The third question, which component of the cell theory states that all living organisms are composed of one or more cell? Cell theory रो केन पॉइंट दैट पचरो छै जे organisms are composed of one or more cell. देखो फर्स्ट ऑप्शन देला cells arising from the pre-existing cell. ऑप्शन बी देला all organisms are composed of cells. ऑप्शन सी देला cells are the basic unit of structure and function. and ऑप्शन डी देला cells are the smallest unit of cell. किन पॉइंट ता कहू जे all living organisms are composed of one or more cell. that is your all living organisms are composed of cell. सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जेतले देखमा सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रे काना प्रेजेंट थिसी बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट थिसी. सो दैट आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. द आइडिया दैट cells are the basic unit of structure and function is attributed to dash. Cells are the basic unit of structure and function. Okay देखो हमर स्लाइडन एंड स्वान जेतले देखुछु स्लाइडन थिले हमर काना स्लेडन थिले बोटानिस्ट एंड स्वान थिले अमर जूलॉजिस्ट. ओके सो अमर स्लेडन रो कांसेप्ट हिसाब ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. स्वान रो हिसाब ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके दैट मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज गोस टू द सेल्स. तो ये कांसेप्ट कहा था दैट इज कम फ्रॉम द सेल थ्योरी. एंड सेल थ्योरी रे प्रपोज केन माने दुटा साइंटिस्ट करथिले दैट इज योर स्वान एंड स्लाइडन. सो दैट हमर ऑप्शन ए हबा करेक्ट आंसर. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. who is known for his observation of cork cells leading to the term cell? हमर सेल जन जहा के मैं सेल बोली करी कहूछु से सेल टा पहला की ऑब्जर्व करथिले केनु कॉर्क सेल रो ऑब्जर्व करथिले. कॉर्क सेल रो ऑब्जर्व के करथिले दैट इज योर रॉबर्ट हुक. सो दैट करेक्ट आंसर दैट इज योर सी, दैट इज रॉबर्ट हुक. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द स्टेटमेंट all cells come from pre-existing cell is the part of dash. देखो सब कहला क्वेश्चन रे जे हमर न्यू सेल्स और all cells come from the pre-existing cell. इतर लगे गोटे ग्रीक भाषा रे गोटे टर्म थिला, गोटे स्टेटमेंट थिला काना omnicellular e-celluli. omnicellular e-celluli that was given by Rudolf Virchow. तो हमर टेनेट और किछटा प्रिंसिपल तीनटा प्रिंसिपल रो टोटल सेल थ्योरी के डिवाइड करा जायसी. मतलब जे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल. फर्स्ट टेनेट. दुई नंबर टेनेट हला जे हमर सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम. एंड थर्ड टेनेट हला जे न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. नुआ सेल माने प्री एग्जिस्टिंग सेल रो फॉर्मेशनेशन. तो एटा हमर केते नंबर टेनेट रे जीवा दैट इज द थर्ड टेनेट ऑफ द सेल थ्योरी. तो हमर करेक्ट आंसर हबा सी, that is the third tenet of the cell theory. Then question number 7. The prokaryotic cells lack a true dash. हमर prokaryotic cell पाके काना lack करसी काना नहीं थे. Yes, nucleus नहीं था, cytoplasm थीसी, plasmid थीसी. हमें बैक्टीरिया कैसे देखी जो सेल मेम्ब्रेन थीसी बैक्टीरिया कैसे देखी दो
तो अमर नाइथ केनटा दैट इज ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नाइथ है ट्रू न्यूक्लियस जागा रे गुटे इनसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट थिसी और गुटे प्रो न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस जहा की कहसु जहा के हमें न्यूक्लियोइड बोली करी कहसु दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड रीजन और जीनोफोर बोली करी कहसु राइट तापर रखो क्वेश्चन नंबर 8 यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस यूकैरियोटिक सेल रे काना थिसी सेल वॉल थिसी यस सेल वॉल दा प्रोकैरियोटिक सेल रे थिसी ट्रू न्यूक्लियस ता प्रेजेंट थिसी यस अमर यूकैरियोटिक सेल रे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट थिसी एंड राइबोसोम जे देखमा दुही तरह प्रेजेंट थिसी अमर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल रे प्लाज्मेट ता प्रोकैरियोटिक सेल रे थिसी तो इनो कहला यूकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश ई सब भितरु हमें केनटा थिले हमें ताके यूकैरियोटिक सेल कहमा दैट इज योर ट्रू न्यूक्लियस बिकॉज़ बाकी सब जदी देखमा सेल वॉल ता प्रोकैरियोटिक सेल रे थिसी राइबोसोम ता भी प्रोकैरियोटिक सेल थिसी एंड प्लाज्मेट ता भी हमर प्रोकैरियोटिक सेल रे थिसी बट ट्रू न्यूक्लियस ता ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 the discovery of the cells as the basic unit of life is often associated with this amor cell के basic unit of life बोली करी कहना and cell रो discovery केन year रहला 1665 रहला that means सटा के हमें केते century question that is your 17th century तमोर it रहला 17th century will be the correct answer right next question number 10 who proposed the concept of spontaneous generation which was later disproved by the cell theory स्पॉन्टानियस जनरेशन कांसेप्ट ता गोटे थ्योरी थिला आगरु सेल थ्योरी आसवा आगरु स्पॉन्टानियसली हमर न्यू ऑर्गेनिज्म रो जनरेशन हेसी कांसेप्ट ता देथिले कि दैट वाज गिवन बाय लुइस पास्चर बट लेटर ऑन लुइस पास्चर रो कांसेप्ट ता के डिस्प्रूव कला सेल थ्योरी दैट वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान सो दैट इनो क्वेश्चन रो अछि जे हमर स्पॉन्टानियस जनरेशन थ्योरी ता के प्रपोज करथिले दैट वाज प्रपोज्ड बाय लुइस पास्चर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 The plasma membrane is essential for what? Plasma membrane is essential for the cell integrity and communication. Option B energy production, C protein synthesis or D waste elimination. जे देखमा सेल रो जन इंटीग्रेशन अच्छे सेल रो जन स्ट्रक्चर बनी छे एज वेल एज सेल रो जन कम्युनिकेशन होचे दैट इज डन बाय दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा सेल रो इंटीग्रेशन हेसी एज वेल एज सेल टा गुटे सेल टा आउटे सेल संगे कम्युनिकेशन करसी थ्रू द receptors which are present over the plasma membrane so that the correct answer will be the A okay next question number 12 the fluid mosaic model describes the structure of what fluid mosaic model हमें केनो पढिचो हमें तीनटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो मॉडल पढितिला सैंडविच मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड अनदर वन फ्लूइड मोजाइक मॉडल जेंटा की मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेंटा की हो जमर काना दैट इज डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन okay so fluid mosaic model का तरह लग गया that is for the cell membrane that is not for the nucleus that is not from the endoplasmic reticulum or Golgi apparatus okay next question number 13 the endosymbiotic theory explain the origin of death endosymbiotic theory माने काना देखो endosymbiotic theory रो माने हला जे हमर गोटे कांसेप्ट अछि हमर जे यूकैरियोटिक सेल रो भितरे माइटोकॉन्ड्रिया अछि क्लोरोप्लास्ट अछि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल रो भीतर के केनता करी असला ओके सता के कंपैरिजन करा जैसे जे हमर जन यूकैरियोटिक सेल अच्छे से यूकैरियोटिक सेल हुए तो प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल मान को एनगल्फ कर देथिबा सो दैट से माने जेते बेले सेल रो भीतर के गले दे बिहेव एज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बिकॉज़ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मानकर जदी देखमा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत सारा सिमिलरिटीज रहसी कार संगे बैक्टीरिया संगे सिमिलरिटीज रहसी से कांसेप्ट के कहसी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोली करी कहा जैसे सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दैट इज एसोसिएटेड विद द origin or the explain the origin of mitochondria as well as chloroplast so option C will be the correct answer next question number 14 which scientist first observed living cells under the microscope living cell के अमर माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करथिले अमर के फर्स्ट सेल के ऑब्जर्व करथिले बोले हमें माइंड रे अच्छे फिक्स अच्छे रॉबर्ट हुक बट लिविंग सेल क्वेश्चन यदि असला देन द करेक्ट आंसर दैट इज योर एंटन वॉन लिविनहुक जे के एनिमल पुल्स बोली करी ना देथिले बट लेटर ऑन जना पड़ला सदा काने बैक्टीरिया माने यार सो दैट एंटन वॉन लिविनहुक के कहा जैसे ही डिस्कवर द बैक्टीरिया आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 which organelle is responsible for cellular respiration kin organelle that is responsible for cellular respiration
सेलुलर रेस्पिरेशन माने काना सेल रो भीतर जेन रेस्पिरेशन प्रोसेस होचे एनर्जी एटीपी फॉर्म रे जनरेशन होचे केन होचे दैट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया सो दैट करेक्ट आंसर विल बी योर माइटोकॉन्ड्रिया okay next question number 16 the central dogma of molecular biology involve the flow of information from dash सेंट्रल डगमा कहा के क्वेश्चन सेंट्रल माने मेन डगमा माने प्रिंसिपल हमर लिविंग ऑर्गेनिज्म केस रे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे गोटे मेन प्रिंसिपल और बेसिक प्रिंसिपल अछि जहा के क्वेश्चन सेंट्रल डगमा एंड सेंट्रल डगमा कांसेप्ट दैट वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक ओके सेंट्रल डगमा काना को होचे जे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस हमर प्रोटीन रो जे इंफॉर्मेशन अछि केनो स्टोर हेगिर अछि डीएनए रे सो इंफॉर्मेशन केन के ट्रांसफर अछि आरएनए के एंड आरएनए एंड राइबोसोम मिसिगिर काना सिंथेसाइज करसन प्रोटीन सिंथेसाइज करसन ताके क्वाइसे काम बोलिकरी सेंट्रल डगमा बोलिकरी कहवा जैसी सो सेंट्रल डगमा दैट इन्वॉल्व द unidirectional flow of information from DNA to RNA and RNA to protein synthesis so that the option A will be our correct answer okay next question number 17 the site of protein synthesis in a cell is the dash protein synthesis or site kenta actually question जदि देखमा हमर ना आउट ऑप्शन जदि थिता साइटोप्लाज्म जदि कहिता साइटोप्लाज्म मे भी द करेक्ट आंसर हेतै पारि थिता बट इना जदि कहला साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस माने केन जागर रे हमर प्रोटीन सिंथेसिस होचे एंड प्रोटीन सिंथेसिस रो लागि केन ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होचे देन द राइबोसोम दैट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस सो दैट द करेक्ट आंसर विल बी द सी okay next question number 18 which type of cell contain the membrane bound cell organelle केन टाइप रो सेल रे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट थी ओनली यूकैरियोटिक सेल केसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट थी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में कहा के कहसु जेन सेल ऑर्गेनेल मानकर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा कवरिंग थी समान को कहसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जेने के न्यूक्लियस पाखे डबल मेम्ब्रेन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखे मेम्ब्रेन थी गोल्गी बॉडीज पाखे मेम्ब्रेन थी लाइसोसोम पाखे मेम्ब्रेन थी माइटोकॉन्ड्रिया पाखे मेम्ब्रेन थी क्लोरोप्लास्ट पाखे मेम्ब्रेन थी समान को कहसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ओनली फाउंड इन केस ऑफ योर यूकैरियोटिक सेल दैट इज नॉट present in case of your prokaryotic cell नहीं था only केनो थी यूकैरियोटिक सेल थी so that the correct answer will be the P question number 19 the cell theory the idea that cell can only arise from pre-existing cell was proposed by this देखो cell theory पहला propose करले स्लेडन एंड स्वान but later on cell theory रो किछटा डिमेरिट्स रहि जितला और cell theory रे टिके कमी रहि जितला से cell theory के मॉडिफाई करबार लागि असले के another biologist that is रुडोल्फ भार्चो and रुडोल्फ भार्चो गुटे स्टेटमेंट नेकरी असले omnicellular e-cellular omnicellular e-cellular माने काना new cells originated from the pre-existing cell so that the correct answer will be your Rudolf Virchow okay question obviously who modify the cell theory that is Rudolf Virchow and Rudolf Virchow काना कहतिले गोटे स्टेटमेंट सेटा भी क्वेश्चन आसी that is your omnicellular e-cellular मन रखितो इथुर भी क्वेश्चन आसी right next question number 20 the nucleus is primarily responsible for the production of dash हमें लास्ट क्लास रे में डिस्कस करथला न्यूक्लियस बाबत रे न्यूक्लियस काना प्रोडक्शन करबार लागि इन्वॉल्व रहसी न्यूक्लियस दैट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइबोसोमल आरएनए okay as well as that also involved in the formation of precursor of ribosome not only ribosomal RNA आरआरएनए बनासी तार संगे संगे राइबोसोम बनाबर आउ भी किछि सब्सटेंसेस आउ भी किछि प्रोटीनासियस ग्रैन्यूल सेटा भी बनाबर थरे इन्वॉल्व रहसी सो दैट करेक्ट आंसर जे देखमा राइबोसोमल आरएनए भी हेई पारितिता बट एना आगुटे भी ऑप्शन अछि राइबोसोमल सब यूनिट्स बोली अछि तो राइबोसोमल सब यूनिट्स मानकर भी किछटा पर्सन बनुचे सो दैट हमर इनो टे क्वेश्चन रो जदी ऑप्शन देखमा कंफ्यूज करला सो दैट राइबोसोमल आरएनए भी एस प्रोडक्शन एस न्यूक्लियस रे एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स मानकर भी फॉर्मेशन एस न्यूक्लियस रे so that B भी ही पारबा correct answer D भी ही पारबा but most appropriately जदी मा ribosomal subunit will be the correct answer okay next question number 21 the process of cellular respiration takes place in dash आगरु क्वेश्चन थिला अगेन रिपीट हेचे cellular respiration हमर केन होसी that is in mitochondria right the theory that mitochondria and chloroplast were once free living bacteria is known as dash इधर भी क्वेश्चन थिला उल्टा हिसाब थिला क्वेश्चन ता कारण कहला गुड थ्योरी जे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वेयर फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहला जे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट माने आगरु काना थिले बैक्टीरिया थिले कहले जे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भितर किछिटा ए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जे देखमा बैक्टीरिया मानकर संग किछिटा सिमिलरिटीज थिसी ओके ई कांसेप्ट ता के कहसी दैट थ्योरी वाज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23
In the cell cycle, the phase where the cell undergoes active growth and preparation for division. Okay, our active growth je dekhma amar G1 S G2 tinta hocha amar kana, that is your preparatory phase. So mostly active phase jodi kahba, that is the G2 phase will be the most active phase. Okay, in case of your S phase, DNA synthesis DNA replication can phase resi, then you have to write the S phase, right? Next, the process of cytokinesis in animal cell involve the formation of dash. देखो हमें सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़वार अच्छे तली, बट आगुर मोर चैनल रे अपलोड एक सीरीज जदी हमें जिमा हमर प्लेलिस्ट अच्छे सेल साइकिल सेल डिवीजन रो भी प्लेलिस्ट अच्छे सेन हमर सेल साइकिल पढ़ाई छे सेल डिवीजन पढ़ाई छे। तो एनिमल सेल केस रे जते बेले साइटोप्लाज्म रो डिवीजन है, साइटोप्लाज्म रो डिवीजन के कोइ से साइटोकाइनेसिस जते एनिमल सेल रे साइटोकाइनेसिस से टाइम रे हमर दुई साइड रो काना फॉर्मेशन है गुडे इनग्रो फॉर्मेशन है ताके कोइ से क्लीवेज फोरो बोली कि लिखवा जैसे। ओके, सो क्लीवेज फोरो फॉर्मेशन है, बट हमर जदि क्वेश्चन है तो प्लांट सेल केस रे काना फॉर्मेशन है, दैट इज योर सेल प्लेट का फॉर्मेशन है प्लांट सेल केस रे, बट क्लीवेज फोरो का फॉर्मेशन है केन केस रे, इन केस ऑफ योर एनिमल सेल केस रे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, what is the main function of the Golgi apparatus? Golgi apparatus रा main function काना? The main function for the Golgi apparatus is energy production, protein synthesis, nucleic acid synthesis, or modifying, packing and sorting of the proteins. Golgi apparatus रे कैसे भी substances सला तार modification हबा। Golgi apparatus रे कैसे भी substances सला तार packing हबा vacuoles रे या फिर vesicles रे। ओके, और तार sorting हबा केनटा केन टाइप रो प्रोटीन से ताके sorting करा छबा, that is done inside the Golgi apparatus, so that our D option will be the correct answer. Okay, so this is for the today's session, 25 questions related to the cell biology we have discussed, and in the next class we will continue this session. Please like, share and subscribe our channel. I think you all enjoy this session. Thank you.